Hi, welcome to all viewers. I am Chittaranjan Das. Okay, let us today we study about the application of inductive effect. In last class, we clearly discussed what is inductive effect. Inductive effect means the displacement of electron. Inductive effect mean displacement of electron. Displacement of sigma electron. Okay, so displacement of sigma electron always displace from more electronegative atom to less electronegative atom. Electron always displace from more electronegative atom to less electronegative atom. Okay, suppose C has attached to an atom which has more electronegative. If more electronegative atom, another C has less electronegative atom. Okay, suppose X is more electronegative than C. Here is Y is more electronegative than C. Then electronegative mean what? Electronegative mean tendency to attract share pair electron. As it is covalent bond, this lone pair attracted by both atom. As it is more electronegative, then electron pair displaced toward the X because it is the more electronegative. जेहेतु आर अधिक electronegative अच्छी, then electron pair displaced towards the X. As displaced toward the X mean carbon 2 जेहेतु X आर को electron pair पळौची, so it has minus I effect. And as it has the less electronegative atom, the electron of Y attracted by carbon. ये कार्बन रो इलेक्ट्रॉन को X attracted करनेला, इधर Y रो इलेक्ट्रॉन को कार्बन attracted करनबो. That's why it is plus I effect. तो mean inductive effect are two type. One is plus I, another one is minus I. Okay, we have also read about the some plus I effect and some minus I effect and their order. Plus I, first the order of, this is the most important for the application of the inductive effect. तो इंडक्टिव इफेक्ट एप्लिकेशन करने पूर्व आमको से ऑर्डर को मन रखा पड़ो कही ये हूँ नॉलेज पार्ट. ओके, फॉर माइनस आई इफेक्ट फॉर माइनस आई इफेक्ट दैट इज बॉन्ड NF3 plus greater than the bond NR3 plus greater than bond NH3 plus greater than bond NO2 greater than bond CN greater than bond COOH greater than bond F greater than bond, here is bond CN, then bond CHO bond ketone, then bond COOH carboxylic acid, then bond F, then bond Cl, then bond Br, then bond I, then bond OR, then bond OH, then C triple bond C triple bond C, then bond NH2, then bond C6H5, then bond C double bond C. Okay, here is bond C triple bond CH. This is the for minus I effect. For plus I effect, plus I effect bond CH2
minus bond NH minus greater than bond O2 minus bond COO minus bond CH3 whole 3 C mean tertiary alkyl greater than bond CH3 whole 2 CH C2H5 bond C2H5 mean ethyl greater than bond CH3 methyl. These are the plus, these are the minus I order. Mean these are the minus I effect. Means if these compounds are present or attached to the carbon, this shows the minus I effect. যদি এগুড়িক লাগুচি সেটি মাইনাস আই ইফেক্ট, যদি এসবু গ্রুপ লাগুচি দ্যাট ইজ প্লস আই ইফেক্ট। ওকে, ইয়াকু নেই আমি তার আপ্লিকেশন করিবা। ওকে, ইন্ডকটিভ দ্যাট ইজ দ্য আপ্লিকেশন অফ ইন্ডকটিভ ইফেক্ট। application of inductive effect mean for stability. First for stability. For stability means more minus I effect has more stability. And opposite side less plus I effect is less stability. Okay, less stability. यदि माइनस आई इफेक्ट अधिक रोची देन मोर स्टेबिलिटी, यदि माइनस आई इफेक्ट अधिक रोची जार मोर माइनस आई इफेक्ट मोर स्टेबिलिटी, लेस प्लस आई इफेक्ट लेस स्टेबिलिटी. यदि आसु -1 माइनस आई इफेक्ट एंड 1 प्लस आई इफेक्ट देन मोर माइनस आई इफेक्ट ऑलवेज मोर स्टेबल देन इफेक्ट always more stable than plus I effect. Okay, minus I effect always more stable than plus I effect. Minus I effect टा सब बड़े plus I effect टू अधिक stable रोच. Clear? For example, आमे इना किसी question करिवो according to the stability order. The maximum entrance question there the order type question must be come. सबु entrance question गुडी करो order type question तो निश्चित आसीबो. Suppose HCOO minus CH3 COO minus CH2 Cl COO minus. देखो here is no I effect, किछि I effect नहीं, कौन से ना आ भितर लागी किछि ना आया भितर किछि लागी हैला ना प्लस I effect लागी ना माइनस I effect लागी. Here you look that. Okay, HCO minus, this is the parent, this is only H, so no I effect. Here is CH3 mean CH3 is the methyl mean plus I effect. CH3 mean what? Methyl last CH3 mean plus I effect. Here is alkyl RCOH, but here is Cl. Cl means minus I effect. तो ये माइनस आई इफेक्ट यदि आम देखा माइनस आई इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन प्लस आई इफेक्ट मीन नो आई इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन प्लस आई इफेक्ट. ओके, सो suppose here is A, here is B, here is C is more stable than B, more stable than A. तो ये कहेंगे इफेक्टिव अधिक जदि तार रीजन जानवा को चाहछो, इफ यू वांट टू द रीजन हियर इज द नेगेटिव चार्ज. देखो एटी नेगेटिव चार्ज अछि. इफ द माइनस आई इफेक्ट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, एटी जेतु क्लोरीन रहला ये कार्बन रो इलेक्ट्रॉन जदि अट्रैक्ट करनला कार्बन
तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यार को अट्रैक्ट हो गले तो ये ऑब्वियसली तार स्टेबिलिटी मेंटेन हो किंतु या पाखर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अच्छी ये गोटे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग प्लस आई मीन व्हाट्स इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे यार को तो यार नेगेटिव चार्ज अच्छी या आउ गोटे नेगेटिव चार्ज होची ऋण उपर ऋण बजी होची हैला या पाखर नेगेटिव अच्छी पुणी ये नेगेटिव दे तो ऑब्वियसली अनस्टेबल हो जिवो ऑब्वियसली ये कोन हो जिवो अनस्टेबल हो जिवो बल्कि देखो यार नेगेटिव चार्ज अच्छी यार जो इलेक्ट्रॉन को सीएल नहीं नौचु ये पॉजिटिव हो पॉजिटिव हेले ये माइनस चार्ज ता लून टाकू ता ऋण टाकू ये टाणी आनुची हल्का कर नौची सो यार तो स्टेबिलिटी बढ़िबो ही बढ़िबो सो इट इज मोर स्टेबल देन हियर इज नो आई इफेक्ट तो यार तो माइनस अच्छी तापर कि लदिबार नहीं सो आफ्टर दैट दिस देन दिस सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ओके सपोज FCOO minus ClCO ClCOO minus ClCH2 COO minus then BrCOO minus देखो सबुथिरे FCl Cl Br सबुथिरे माइनस आई इफेक्ट अच्छी कौन अच्छी फर्स्ट व्हिच आइडेंटिफाई व्हिच इफेक्ट सेठी कौन इफेक्ट रोची माइनस आई इफेक्ट रोची एटी कौन रोची माइनस आई इफेक्ट रोची देन मोर माइनस आई इफेक्ट FCl Cl Br तो मोर इज द F तो F पाखरे अधिक अच्छी सो इट इज मोर स्टेबल F पाखरे जेतु अच्छी मोर माइनस आई इफेक्ट इज द मोर स्टेबल जेतु F रो ऑर्डर रे कौन अच्छी फ्लोरीन अधिक अच्छी तो से यार माइनस आई इफेक्ट अधिक माने ये अधिक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करिवो यार जो पॉजिटिव चार्ज अधिक रहले ये तार इलेक्ट्रॉन को यार को डिस्प्लेस करे आनिबो सो इट इज मोर स्टेबल देन हियर इज Cl बोथ दिस कंपाउंड आल्सो Cl दिस कंपाउंड आल्सो Cl पर साथ एटी सेम अछि बट एटी देखो डिस्टेंस बढ़ी होछि तो डिस्टेंस बढ़िले चार्ज कमी जिवो इफेक्ट भी कमिवो ओके इफेक्ट always inversely proportional to distance inversely proportional to distance effect inversely proportional to distance effect always inversely proportional to distance here is in the distance it is increased so it is less effect it is more effect so if A B C D A is more reactive than B more reactive than C both are the chlorine but here is the distance increases then D these are the effect of what effect of stability then the effect on acidic character this is the most important concept most important question okay each and every exam there is the order based question must be come most and acidic character effect on acidic character effect on acidic character first you understand what do you mean by the acidic character mean what acidic character mean lose of H plus ion after lose H plus ion after lose H plus ion it forms the conjugate acid conjugate base it form conjugate base after lose H plus ion it form what conjugate base so acidic character depend upon the conjugate base stability of conjugate base तो एसिडिक कैरेक्टर सब डिपेंड करिवो कहाँ पर ना स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस
जदि H प्लस आयन नेला परे यार स्टेबिलिटी अधिक रहतो देन इट इज इजीली लूज द H प्लस आयन जदि ये H प्लस आयन देला परे जे बेस फॉर्मेशन होतो तार स्टेबिलिटी अधिक रहबो से तो ऑब्वियसली H प्लस आयन को लूज करते ही चाहिए लूज करते चाहिए टेंडेंसी टू लूज H plus ion tendency to lose H plus ion are known as acidic character. If a substance has tendency to lose H plus ion, then it is acidic character. Then tendency to lose H plus means after lose of H plus ion it convert to conjugate base. Then if the conjugate base is more stable, means acidic character always depend upon acidic character always depend upon the acidic character always depend upon the stability of conjugate base stability of conjugate base acidic character always depend upon the stability of conjugate base stability depend upon I effect inductive effect okay mean more minus I effect more stable so it shows the more acidic character okay more minus I effect we have said that more stability mean more acidic character so more minus I effect more acidic character less plus I effect has a less acidic more acidic character जदि माइनस आई सबू माइनस आई इफेक्ट अच्छी तो से जार अधिक रोचे सी अधिक एसिडिक कैरेक्टर जदि सबुड़िक प्लस आई रोचंती तो से जी लिस्ट प्लस आई मोस्ट प्लस आई सॉरी मोस्ट माइनस आई मोर एसिडिक if the plus I effect least plus I effect is the more acidic okay least plus I effect is the more acidic suppose HCOOH ClCOOH Cl FCOOH and BrCOOH देखो एठू H लूज हेले HCO माइनस लूज हेले ClCO माइनस एठू H लूज हेले FCO माइनस BrCO माइनस फॉर्मेशन हम बिकॉज H जदि रोची ये जदि लूज करची H प्लस A माइनस दिस इज द कंजुगेट बेस एथिरे कंजुगेट बेस है HCO माइनस एथिरे ClCO माइनस एथिरे FCO माइनस एथिरे BrCO माइनस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी आ भितर कार अछि ना मोर माइनस आई इफेक्ट तो हियर इज नो इफेक्ट ए भितर किछि आई ही नाही नो इफेक्ट हियर इज माइनस आई इफेक्ट ये सब गुडी को भितर कोन अछि माइनस आई इफेक्ट अछि केना Cl अछि फ्लोरीन अछि ब्रोमाइड अछि FCl Br that is the minus I effect and more is the F suppose this is A this is B this is C this is D so as F is the more minus I effect so C is more acidic then Cl B then D then A okay clear देखो ये नो माइनस नो इफेक्ट आ भितर किछि HCO इतरे किछि इफेक्ट ही नथिला किंतु एथिरे सब माइनस आई इफेक्ट थिला तो माइनस आई इफेक्ट भितर डिक्रीजिंग ऑर्डर होतला अधिक कार सब टू फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन सो इट इज मोर एसिडिक देन दिस ओके सपोज क्वेश्चन
CH3 COOH H COOH CH3 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 HCOOH and CH3 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 COOH. Okay, taka ethi plus I effect, here is no effect, H means no effect, here is 2 degree, here is 2 degree mean plus I effect which is 2 degree, here is 3 degree plus I effect which is 3 degree, it is 2 degree at 3 degree. তাহলে ফার্স্ট ইয়াক ভিতরে নো ইফেক্ট ইজ দ্য মোর অ্যাসিডিক, ইয়াক ভিতরে যে নো ইফেক্ট রয়েছে কারণ ইয়া ভিতরে তো টোটালি প্লস নাই, বাকি প্লস ভিতরে যে লিস্ট আছে এটি 3 ডিগ্রি, এটি 2 ডিগ্রি, এটি 1 ডিগ্রি। তো আমি জানতে 3 ডিগ্রি হ্যাজ দ্য 3 ডিগ্রি হ্যাজ মোর প্লস আই ইফেক্ট, 3 ডিগ্রি হ্যাজ মোর প্লস আই ইফেক্ট, 3 ডিগ্রি পাখর প্লস আই ইফেক্ট অধিক আছে, সো ইট ইজ লিস্ট অ্যাসিডিক ক্যারেক্টর। 3 degree 2 degree 1 degree ভিতরে লিস্ট প্লস আই ইফেক্ট হচ্ছে 1 degree, so it has more acidic character. So if A B C D and H it is non মানে no I effect, so B is more acidic. Then among the 3 plus I effect, তিনটা plus I effect ভিতরে 1 degree রে অধিক মানে less plus I effect, so more acidic mean A. Out of 2 degree and 3 degree, 3 degree is more plus I effect, 2 degree is less plus I effect, so then C, then D. If decreasing order this, if increasing order D, less than C, less than A, less than B. Okay, it is the comparison between plus I effect. Suppose what is inside plus B अच्छी minus B अच्छी, plus I effect अच्छी minus I effect अच्छी, CH3 COOH H COOH CH2 Cl COOH CH ClCl COOH। पहले देखो CH3 COOH H COOH Cl CH2 COOH Cl2 CH COOH. Here is CH3 mean plus I effect, CH3 mean कौन plus I effect। तो हमको आइडेंटिफाई करिवार अछि whether it is a plus I or minus I, केमते ना हमको एते दिन से मन रखिवार अछि। ओके, otherwise you just feel like to watch the non mother tongue movie, गुटे तुम समझ मदर टंग ओडिया रही तुमको तेलुगु फिल्म देखला भाया लगे, कहीं हमको बेसिक नॉलेज जदि नॉलेज पार्ट अभाव रोचे तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो निश्चित प्रॉब्लम क्रिएट करिवो। जेहेतु ये CH3 अच्छी, CH3 मीन्स दिस इज द प्लस आई इफेक्ट, H मीन्स दैट इज नो इफेक्ट, हियर इज Cl माइनस आई इफेक्ट, हियर इज 2 minus I effect, here is 2 minus I effect, and out of plus and minus I and minus I the more stable mean more acidic character। यदि हमें माइनस I को दे प्लस I और माइनस I भितर कथा देखिबा, then minus I is the more stable, तने ये दिटा रहले माइनस I, तो पुणी आक भितर के अधिक स्टेबल कार अधिक acidic character ना जहाँ पाखरे मोर अच्छे 1 minus I effect 2 minus I effect, obviously D then C then H and CH3, here is plus I, here is no, तो प्लस I अपेक्षा क्या है नो इफेक्ट, सो B then A। This is the acidic order, this is the acidic order effect of the plus I and a minus I effect, plus I and a minus I effect, plus I and a minus I effect, plus I effect minus I effect को नहीं की।
तो आम भी एसिडिक कैरेक्टर जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट को लेकिन बाहर कर सपोज एच ए गिव्स टू एच प्लस प्लस आई माइनस एच ए गिव्स राइज टू एच प्लस एंड आई माइनस एच प्लस एंड आई माइनस को लेकिन आम आइडेंटिफाई करूँ तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट के तो के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस into concentration of I minus divided by concentration of HA. The acidic character depend upon the H plus ion. When concentration of H plus ion increases, the value of Ka increases. Mean more Ka value, more acidic. More Ka value, more acidic. If Ka value are given, suppose 3-4 value तार जो Ka value हमको अच्छी जना अच्छी सी भी नॉलेज पार्ट बा क्वेश्चन रे गिवन था ओके मोर Ka value मोर एसिडिक जार Ka value जते अधिक अच्छी तार एसिडिक कैरेक्टर सेते अधिक हबो आ गोटे अछि Pk value Pk mean minus log concentration of के तो जदि के र वैल्यू अधिक हो पीके र वैल्यू कमी जीवो देन लेस पीके वैल्यू लेस पीके वैल्यू मोर एसिडिक ओके लेस पीके वैल्यू मोर एसिडिक देन उडा ऑर्डर अच्छी ऑर्डर बेस रे भी तुम एसिडिक करेक्ट ऑर्डर लिखि परिबो ऑर्डर बेस्ड अच्छी मींस बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H is more acidic than HCOOH, then more acidic than benzoic acid, then more acidic. It is more acidic than RCOOH, then H2CO3, then phenol, then water, then alcohol, then alkyne CH triple bond CH, then alkene CH2 double bond CH2, then alkane CH3 double single bond CH3. Okay, this is the order based. आ गुटे रहला प्लस आई एंड इंडक्टिव इफेक्टिव बेस्ट आ गुटे कोन अछि इंडक्टिव इफेक्टिव बेस्ट इंडक्टिव इफेक्टिव बेस रे मोर माइनस आई इफेक्ट ओके जदि एमती स्पेशली देखियो आगे माइनस आई इज नो इफेक्ट देन ग्रेटर देन प्लस आई एमंग मोर माइनस आई मोस्ट माइनस आई मोर एसिडिक लेस प्लस आई इफेक्ट मोर एसिडिक तो ये सब एसिडिक ऑर्डर को फाइंड आउट करने हुए आइदर यू कैन आइडेंटिफाई और कैन डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव बेस्ट और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ के वैल्यू मोर एसिडिक और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पीके और ऑर्डर बेस्ट benzene sulfonic acid then this okay suppose metanitrophenol
Question I will find out the write the correct acidic order. Phenol, metanitrophenol, or 1, 2, 3, 3 nitrophenol, 4 nitrophenol, and 3, 4 dinitrophenol. 3, 4 dinitrophenol. Which one is more acidic? आप इधर पर write the correct acidic order. All are the phenol. Then you see that attacking reagent NO2. NO2 is a plus I effect or minus I effect? Plus I effect or minus I effect? NO2 is the plus I effect. Sorry, NO2 is the minus I effect. And it contains 2 NO2 group. 2 NO2 group means 2 minus I group. As it contains 2 minus I, so here minus I to अधिक रहुची. So it is D is the more acidic. D is more acidic. Then here is 1 minus I effect, here is 2 minus I effect. Then कहलो सर यारो distance कम अच्छी, यारो distance अधिक अच्छी, तो ये अधिक हब्बो किंतु नहीं. ये गुटे due to resonance और mesomeric effect सब बोले ortho and para position is more minus effect than the meta position. So इटा मने रखियो para ortho and para position is more stable than a meta position. So it is more acidic than meta nitro. So then C, then B, then A. Then A, because all are the phenol. But then see the attacking reagent is the NO2. NO2 means minus I group. माइनस आई ग्रुप भितर पुणी कंपेयर करबा कहार अधिक अछि एटी दुईटा नोट अछि तो ऑब्वियसली यार अधिक पळेला सो इट इज मोर नेगेटिव देन आसला गुटे गुटे अछि तो कहतिले आपण सर डिस्टेंस बेस रे सेटा किंतु एलिफैटिक रे थिला जेतरे एरोमेटिक रे रीजन बेस आसी होछि मींस मेसोमेरिक इफेक्ट जेतले हम नेक्स्ट को पढिबु मेसोमेरिक इफेक्ट अनुसार ऑर्थो एंड पैरा इज मोर स्टेबल देन मेटा सो इट इज मोर स्टेबल देन दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके ये होछि कोन most important question. So this is the acidic order. This is the acidic order by using the inductive effect. Acidic order by using the inductive effect. Okay, by using the inductive effect. Then basic character, effect on basic character. Effect on basic character. Effect on basic character mean tendency to accept H plus electron, H plus ion. Tendency to accept H plus ion. मान जहाँ less stable थी वो जहाँ पर negative charge अधिक रहूँ से जेटी electron density अधिक रहूँ से तो H plus ion को इजीली accept करिबो ना. Mean just opposite to the acidic character. It's mean just opposite to acidic character. Mean most plus I effect is most basic least minus I effect is the least basic. Sorry, least minus I effect is the most basic among the minus I effect भितर जे least रहउची तार basic character अधिक रहइबो. Then among plus and minus I effect always more acidic than minus I. Series minus I effect is more acidic than plus I. Plus I effect is more acidic than minus I. Less stable is more basic than more stable. Okay, for example यदि हमें एग्जाम्पल नबू
More example, suppose CH3NH2, CH3 CH2NH2, CH3 N CH3 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 N HCH3 NCH3. Then here is plus, here is plus, here is 3 plus, plus I plus I plus I plus I, here is 2 plus I. So it is the most plus I effect, so it is more basic. So 3 degree amine more basic. Then 2 degree amine, 2 degree alkyl, 2 degree mean D, suppose A, B, C, D. Then C is more basic. Then D. Then here is 1 degree, here is also 1 degree. Then here is ethyl, here is methyl. So ethyl is more plus I effect. So B, then A. It is the just opposite to acidic character, just opposite to acidic character. Then we go to the dipole movement. Go to the dipole movement. Go to dipole movement. Effect of inductive effect on dipole movement. Effect on dipole movement. Effect on dipole movement. Effect on dipole movement. Dipole depend upon the distance. Distance depend upon the effective. Minus, so more minus I effect is less dipole movement. Dipole movement. Okay. More minus I, less dipole. Suppose CH3 Cl C2H5 Cl. Means CH3 CH2 Cl. Then here is minus I effect decreases due to increase the distance. जेहेतु distance बढ़ुची minus I effect decrease करची. Here is more minus I effect, more minus I effect, less dipole movement. Dipole movement. It is less minus I effect, more dipole movement. Okay. Less minus effect, so more dipole movement, and it opposite to it the plus I effect. Okay. This is all about the inductive effect. Inductive effect means the displacement of electrons towards more electronegative atom, and displacement of electron of not a pi electron, only for a sigma electron, and without or absence of attacking reagent. Absence of attacking reagent. If the electron displace, if electron displacement okay, if the pi electron, not sigma electron, pi electron displacement takes place due to the presence of attacking reagent are called
electromeric effect. Electromeric effect, as it is the possible due to the presence of attacking reagent. जेता पर्यंत attacking reagent रोचु ये effect possible. So it is temporary effect. It is temporary. Where is the inductive effect? Is the permanent effect. সেটা কোন ছিল? Permanent. That is the on displacement. তার নিজস্ব displacement করতুলা. But এটা কারো influence রে displacement করুছি. It is temporary effect. Mean if multiple bond, suppose carbon double bond carbon achi, and an attacking reagent suppose H plus, then this bond replaced towards this carbon, this 5 electron, so it get minus this carbon plus, then H plus attached to this. Okay, means if the electron displaced toward the attacking reagent, if it is displaced due to the presence of attacking reagent, if electron displaced towards the attacking reagent, that is plus I effect. If electron displaced from away from the attacking reagent, that is minus E effect. Minus E effect. It is also two type. Electromeric effect also two type. One is plus E effect. It's towards the plus I effect means towards electron displacement, pi electron displacement towards the attacking reagent. Minus I effect means the pi electron displace away from the attacking reagent, away from the attacking reagent. Okay, the electrons mean pi electron moves toward the attacking reagent, that is plus, away from the attacking reagent, that is minus. But inductive effect, when electron displaced towards the carbon plus, away from the carbon, that is minus. Okay, here is carbon, here is attacking reagent. The means inductive effect are the permanent effect, whereas electromeric effect are the temporary effect. The most important part is the inductive effect and application of inductive effect, and in special case of the acidic and basic characteristics of different organic compound due to the presence of plus I or minus I effect. So you should remember the plus I means the which are the plus, which shows the plus I effect, which shows the minus I effect, and the order of plus I effect and order of minus I effect. Then it is very easy to identify the acidic character of the substance. Okay, on next class we read about the mesomeric effect. Next class read about the mesomeric effect. This is the most important class, because this is the basic principle of organic chemistry or general organic chemistry. This is also a backbone of the chemistry. Okay, thank you.